ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी को पेश करेंगे और जो सबसे जरूरी चीज होगी वो होगी कि क्या इस बार रिजर्व बैंक के गवर्नर रेट हाइक करते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ इकोनॉमिस्ट का जरूर इस बार मानना है कि इस बार रेट हाइक में पॉज हो सकता है। हालांकि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट यही मानते हैं कि इस बार 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है रेपो रेट में। इसके अलावा जरूरी चीजें होंगी, इन्फ्लेशन का फोरकास्ट, क्या उसमें 6.7% का जो फोरकास्ट है FY 2023 के लिए उसमें कोई बदलाव होता है, या फिर ग्रोथ रेट का जो प्रेडिक्शन था उसमें कुछ बदलाव करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज होगी वो होगी लिक्विडिटी मैनेजमेंट। जो गवर्नमेंट ने बजट में बोरोइंग अनाउंस की है उसके लिए किस तरीके की तैयारी रिजर्व बैंक करता है, और साथ ही साथ जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में गैप बढ़ता हुआ आ रहा है। आपने देखा होगा सारे रिजल्ट्स में बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ कुछ सुस्त रही है, तो वहां पर किस तरीके से बैंक लिक्विडिटी को मैनेज करेंगे, क्या CRR में कोई रियायत मिलेगी, ये सारी चीजें देखनी होंगी इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में। थैंक्स फॉर दैट अंकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे पैनलिस्ट से जुड़ते हैं। लक्ष्मी अय्यर हमारे साथ, सचिदानंद भी हैं हमारे साथ, राजेश कोठारी हैं और हमारे साथ कैनर रुबेको के भी फिक्स इनकम CIO जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए बाजार के। लक्ष्मी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये बताइए सबसे पहले कि आपकी उम्मीद क्या है, डविश पॉलिसी आएगी, कमेंट्री ग्रोथ और थोड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड और डविश होगी, क्योंकि इनके जो हमारे बिग ब्रदर हैं अमेरिका में उनका स्टांस तो ऑलरेडी डविश होना शुरू हो चुका है। जय, गुड मॉर्निंग। तो मूड क्या है पहले मैं आपको बता देती हूँ। एक तो 25 बेसिस पॉइंट जो उम्मीद है रेट बढ़ने की, हमें लगता है कि शायद वो कर देंगे, और एक पॉज क्या वो सजेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा एक एक्सटेंडेड पॉज, वहां पे शायद उनका थोड़ा अंडरटोन समझना बहुत जरूरी होगा। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दो चीजें हो रही है। एक तो ग्लोबल ग्रोथ में हल्की सी जो नमी दिखाई दे रही है वो बरकरार है। हालांकि US में अगर आप देखो तो इकोनॉमिक डेटा काफी मजबूती से बढ़ रहा है, इंक्लूडिंग जो हमने अभी एम्प्लॉयमेंट डेटा देखा हुआ था वो नंबर 1। लेकिन खासकर यहाँ पे अगर हम गौर फरमाए तो यहाँ पे जो है ग्रोथ के आंकड़े हैं, हालांकि विश्व भर से ज्यादा है, डेफिनेटली यहाँ पे भी हल्का सा टेपिड स्पेशली अर्बन के चलते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो ये सबको बैलेंस करते हुए क्या शायद वो एक एक्सटेंडेड पॉज सजेस्ट करेंगे। आई थिंक ये जैसे हम बोलते हैं डेविल इज इन द डिटेल्स, वो आज जरूरी होगा। लेकिन 25 बेसिस पॉइंट एंड शायद अगर वो टोन चेंज कर दे, स्टांस चेंज कर दे, तो वो बाजार के लिए काफी बेहतर हो सकता है। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो 25 BPS पॉइंट्स ये बहुत हद तक फैक्टर इन करके चल रहे हैं कि एक यूनानिमस जो पोल भी हमने किया उस पर भी इसी तरह का व्यू निकल कर आ रहा है। सचिदानंद शुक्ला भी हमारे साथ, चीफ इकोनॉमिक्स महिंद्रा के, उनसे भी समझते हैं, और साथ ही हमारे साथ अविनाश जैन भी होंगे और राजेश कोठारी भी हैं। मार्केट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस पर भी बात होगी। राजेश, क्विक व्यू आपसे भी ले लेते हैं। बाजार क्या 25 BPS को फैक्टर इन करके चल रहा है? क्योंकि एक व्यू ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आया कि शायद रेट हाइक पे पॉज भी आज देखने को मिले, विच इज वेरी लेस ऑन द, बहुत कम है उसके चांसेस, लेकिन व्यू तो ये भी आ रहा है। बाजार इस वक्त क्या उम्मीद करके चल रहा है? हेलो जी राजेश, आपको आवाज आ रही है? या सी बेसिकली मार्केट का एक्सपेक्टेशन वही है। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गाइडेंस। जो अंडरलाइन जो टोन रहेगा वो बेसिकली समझना ज्यादा जरूरी रहेगा। लेकिन गोइंग बाय द रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल्सो गोइंग बाय द रिसेंट यूनियन बजट, it looks like the guidance also, if you ask my personal view, would be a little bit pro growth rather than curtailing the growth, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी नीचे की तरफ आना चालू हो गया है। ग्लोबल इन्फ्लेशन भी नीचे की आना चालू हो गया है और इंडिया का इन्फ्लेशन भी नीचे जाना चालू हो गया है। तो इनफैक्ट we are below probably compared to what RBI's original target was. So the future looks a little bit more positive, direction looks positive, and I think market is also thinking probably right now that it is hopefully is going to be pro growth guidance, and probably this might be the last rate hike if any of 25 बिप्स का ये जो हाइक है, probably ये साल का ये लास्ट हाइक रहेगा, ये बाजार की उम्मीद है।
ये बाजार की उम्मीद है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की हालत क्या है इस समय ग्रोथ को लेके? सच्चिदानंद, आपकी तो नजर एक तरफ तो रूरल साइड पे बहुत मैनी रहती है और ओवरऑल इकोनॉमी पे भी रहती है। इकोनॉमी का हाल इस समय कैसा है? क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अभी तक के जो हाइक्स हुए हैं उनका भी असर लैग करके ही आएगा। आप कैसे देख रहे हैं इंडिकेटर्स को? बिल्कुल अजय, अभी तक जो कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स जिनको हम देखते हैं, बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है। काफी रोबस्ट है सारे इंडिकेटर्स, आप जीएसटी ले लें या कोई भी एक कोइंसिडेंट इंडिकेटर ले लें, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी लैग के साथ इंपैक्ट करता है। और अगर हम इसको अगले 6 से 12 महीनों के व्यू से देखें तो निश्चित तौर पे ग्रोथ में स्लो डाउन दिखाई देगा। काफी लोगों का मानना है कि 100 बेसिस पॉइंट स्लो डाउन हो सकता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में। मेरे ख्याल से आरबीआई के लिए सबसे मुश्किल पॉलिसी होगी इस फिस्कल ईयर की। एक तो ग्रोथ में स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन में हम स्लो डाउन देख रहे हैं हेडलाइन नंबर्स में, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आरबीआई गवर्नर ने पिछली पॉलिसी में 3 चीजें कही थी। उन्होंने कहा था कि हमको फर्दर कैलिब्रेटेड पॉलिसी एक्शंस जरूरी होंगे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को नीचे लाने के लिए, और सबसे जरूरी बात उन्होंने कहा कि हमको कोर इन्फ्लेशन का जो परसिस्टेंस है उसको ब्रेक करना है और हमको सेकेंड राउंड इफेक्ट्स को कंटेन करना है। तो जहां तक ग्रोथ की बात है, हमको अभी बजट में देखने को मिला कि फिस्कल कंसोलिडेशन एक्सपेंडिचर कट के थ्रू किया जा रहा है। बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 4% कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो हमने कभी भी नहीं देखा पिछले 30-40 सालों में। तो ग्रोथ इंपल्स काफी वीक है, बजट से उसको कोई खास सपोर्ट नहीं मिलेगा। यस, केपेक्स पुश होगा, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि सबसे बड़ा लाइन आइटम है एक्सपेंडिचर साइड में 35 लाख करोड़, वो 4% से डी ग्रो करेगा। और गवर्नर ने कहा था कि ही विल कीप अर्जुनाज आई ऑन द इवॉल्विंग इन्फ्लेशन सिनेरियो। तो मेरे ख्याल से ये आखिरी 25 बेसिस पॉइंट मेरे ख्याल से, जैसा कि बाजार भी एक्सपेक्ट कर रहा है, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किंतु ये आखिरी मेरे ख्याल से हाइक होगा इस साइकिल का। और मुझे लगता है कि आरबीआई अब बहुत ज्यादा तवज्जो ग्रोथ को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन, लोग स्लोबलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, रिसेशन तो नहीं पर अब धीरे धीरे स्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। और डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी मुझे लगता है कई तबकों में डिमांड जो है मॉडरेट होगा और हमको ये लैग्ड इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिलेगा। बैक टू यू अजय। राइट, लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। सही कहा अभी सच्चिदानंद ने भी। हेडलाइन इन्फ्लेशन की अगर बात करें, लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स हम देख रहे हैं जबकि इन्फ्लेशन जो है बिलो 6% मार्क जाता हुआ दिखा है। इम्पल्स कैसा क्रिएट होता दिखेगा, और अगर ये आखिरी 25 बेसिस पॉइंट्स या कह सकते हैं कि एक पॉज बटन आरबीआई की तरफ से आता दिखेगा, तो फिर इन्फ्लेशन के फ्रंट पर, ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर देखें भारत की स्थिति इन कंपैरिजन टू ग्लोबल मार्केट्स इन्फ्लेशन के फ्रंट पर कैसी है? हाय मॉर्निंग मानसी। तो अगर हमारे इन्फ्लेशन के अगर आप आंकड़े देखिए तो लगातार जैसे आपने ऑब्जर्व किया नीचे की तरफ चलता आ रहा है, लेकिन एक चीज अपने को देखना बहुत जरूरी है। ये जो हम महंगाई के आंकड़े देख रहे हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन है। अगर आपने गौर फरमाया होगा तो पिछली बारी आरबीआई ने कोर इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ा कंसर्न जाया किया था। जो कोर इन्फ्लेशन है, जो आप खाने के पदार्थ और कच्चे तेल वगैरह के दाम को हटाकर देखते हो, तो वो अभी भी 6% के आसपास है। तो इस वजह से ऑब्वियसली ग्रोथ ग्लोबल तरीके से अगर आप देखो तो डेफिनेटली इंपैक्ट हुआ है। यहाँ पे ग्रोथ का सिलसिला जारी है। हालांकि ये भी देखना बहुत जरूरी है, अब के जो क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां पे हल्का हल्का अर्बन क्षेत्र में भी कंजम्पशन स्लो डाउन के आई वुड से इनिशियल ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। ट्रेंड नहीं कहना चाहूंगी बट इनिशियल साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो यहां आज की पॉलिसी में देयरफॉर इन्फ्लेशन में तो इतना हमको स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज आरबीआई शायद FY 2024 के ओवरऑल इन्फ्लेशन के आंकड़ों को शायद थोड़ा नीचे भी कर सकता है, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन जो ग्रोथ है उसको थोड़ा और बारीकी से देखना पड़ेगा। जो बजट में अनाउंस किया है काफी वाइड रेंज है, 6 की तरफ अगर 6 साढ़े 6 के आसपास हम रहे इस साल FY 2024 तो ठीक रहेगा। ग्लोबली भी थोड़ा बहुत जो हेडविंड्स है वो हल्का हल्का टेलविंड्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है आज बहुत ही जरूरी होगा, पर सर्टेनली ग्रोथ फोकस जरूरी है।
ऑलराइट, बिल्कुल अविनाश, एक बड़ी चीज जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नर ने कही थी वो ये कहा था उन्होंने कि ग्रोथ रिमेन्स रेजिलिएंट, लेकिन बैटल अभी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ओवर नहीं है। इस बार आज क्या उनके स्टांस पर नजर होगी, आप क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि बात ये भी आ रही है कि शायद वो एक स्विच कर सकते हैं अपने स्टांस से, जैसे उन्होंने विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से क्या एक न्यूट्रल स्टांस भी देखने को मिल सकता है। आप क्या की पॉइंट वॉच आउट करना चाहेंगे आज की पॉलिसी में? गुड मॉर्निंग। आई थिंक आज का पॉलिसी में जो हमारा नजर रहेगा वो एक्चुअली स्टांस में ही रहेगा, बिकॉज जो बाकी कोई सरप्राइज नहीं लग रहा है पॉलिसी में। 25 में से सब बोल रहे हैं और वही एक्सपेक्टेशन है। स्टांस जो हमें लगता है शायद आरबीआई न्यूट्रल पे चला जाए, बिकॉज अभी तो इन्फ्लेशन के मायने अपना जो रेट है वो एक्चुअली इट इज नो लॉन्गर विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, बिकॉज 250 बेसिस पॉइंट रेज इंक्रीज कर दिया है रेट आरबीआई ने पिछले 8-9 महीने में, और पॉलिसी रेट पेंडेमिक लेवल के पहले पहुंच गया है ऊपर। तो उसके हिसाब से मार्केट का जो बाजार का जो रुख है वो आई थिंक स्टांस पे रहेगा। स्टांस में थोड़ा चेंज होता है तो मार्केट में थोड़ा सा तेजी भी आ सकता है रेट मार्केट में। विदाउट स्टांस चेंज आई थिंक मार्केट थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि आरबीआई और रेट हाइक करने वाला है कि नहीं, बिकॉज अगर जैसे बात हो रही थी कि फेड ने भी अभी स्टांस बदल दिया है, रेट हाइक कम हो गया है और एक्सपेक्टेशन है कि 1-2 रेट हाइक के बाद फेड भी रुक जाएगा, तो आरबीआई के लिए ये अच्छा रहा कि फेड का पॉलिसी पहले हो गया और उनको भी फेड से भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल गया अपना पॉलिसी सेट करने के लिए। और तो ऐसा लगता है कि स्टांस चेंज इज द मेन थिंग इन दिस पॉलिसी, और ये मेन पॉइंट रहेगा हमें भी देखने के लिए। और अगर स्टांस चेंज नहीं होता है तो मार्केट में थोड़ा सा खलबली हो सकता है। अजेश, आप इंडियन बैंकिंग स्पेस पे कैसा व्यू रख रहे हैं इस समय? क्योंकि एक तरफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ का फायदा उठाया है, बैंक्स एक्चुअली लीडरशिप में रहे, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, इवन पीएसयू बैंक्स, लेकिन अब ये व्यू आ रहा है कि शायद इनकी पीक प्रॉफिटेबिलिटी इनके पीछे और आगे आने वाले महीनों और क्वार्टर्स में मार्जिन प्रेशर्स आ सकते हैं, तो यहां से पैसा निकल सकता है, आपको लगता है? नहीं, इसमें क्या है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉफिट पीक हो गया है क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बेनिफिट बहुत बड़ा आ गया है, बराबर है। लेकिन तो एब्सोल्यूट बेसिस पे, ग्रोथ बेसिस पे पीक हो गया, एब्सोल्यूट बेसिस पे पीक नहीं हुआ है। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बेनिफिट जो किसी ने सोचा नहीं था, 4 महीने पहले लोग बता रहे थे कि ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने अपने एस्टिमेट में ये सब फैक्टर नहीं किया था। लेकिन फिर जैसे जैसे बैंक से बात करते गए, कॉन्फ्रेंस कॉल होते गए, लोगों को कंफर्ट आती गई। तो ये तो क्या है कि बाजार जनरली एक कदम पीछे ही रहा, लोगों के एस्टिमेट एक कदम पीछे ही रहे, और एक्चुअल डिलीवरी वाज सुपर, इट वाज रियल सुपर डिलीवरी। And if you actually want to see the super delivery, you should look at what were the street estimates in the month of April. जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ तो लोगों के एस्टिमेट इतने ऊपर थे ही नहीं, लेकिन banks have delivered and managed extremely well. They could actually contain the cost of funding, and at the same time they were able to pass on the higher interest cost probably to their borrowers. And now because the base is very high, probably in second half of FY24 और एक क्वार्टर अच्छा रहेगा, net interest margin will remain strong even for the fourth quarter. But let me tell you, Ajay, the question right now for the banking sector is less on net interest margin. The right now worry, at least in last 1 month or so, कि ये फिक्स डिपॉजिट का रेट सब लोग बढ़ा रहे हैं, तो ये आगे जाके प्रॉब्लम होएगा क्या? एंड वो अभी फियर नहीं लग रहा है क्योंकि ये लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक है। इनफैक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 3-4 महीने के बाद वापस फिक्स डिपॉजिट के रेट गिरना चालू हो जाएगा। तो ये जो डर था लोगों के माइंड में, जो आज डर है कि सेकंड हाफ ऑफ FY24 कैन बी अंडर प्रेशर, मुझे लग रहा है वो डर भी निकल जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ फंड का जो इंक्रीज है सेकंड हाफ में नहीं होने वाला। ये बेसिकली और एक क्वार्टर का ही प्रॉब्लम है, यू टू मैनेज ओनली 3 to 5 months, एंड आफ्टर दैट दिस विल नॉट बी एन इश्यू। क्रेडिट ग्रोथ रिमेन्स पॉजिटिव, विच इज ए गुड न्यूज, बट वहां पे भी बेस अभी हाई हो चुका है। तो नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो 16, 17, 18% है वो शायद रिड्यूस होके 12, 13, 14% रहेगा। एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन का ये जो बेसिकली बैलेंसिंग मिक्स प्ले आउट होएगा ओवर नेक्स्ट 2-3 quarters. So banking looks reasonably good. Of course, you need to be conscious of the valuations, at what valuations you are buying the banks, because that's something very important. But otherwise, banking story continues to remain reasonably good.
राइट, बैंकिंग स्टोरी रिमेन्स टू कंटिन्यू टू डू गुड। लक्ष्मी, जो एक की वॉच आउट फैक्टर हमेशा रहा है लास्ट 2 पॉलिसीज में, बहुत क्लियरली गवर्नर साहब ने मैन्युफैक्चरिंग सर्विस PMI की बात भी की थी कि एक्सपैंडेड हुआ, इनफैक्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड तक की बात की थी। इस वाले फ्रंट पर सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इस फ्रंट पर भी क्या एक्सपेक्टेशन आज होनी चाहिए? क्या आप इसको भी वॉच आउट करना चाहेंगी, क्योंकि ये बहुत की कंपोनेंट्स भी हैं? आज की तारीख में भी अगर हम ये आंकड़े ट्रैक कर रहे, थोड़ा लैग इफेक्ट से ऑब्वियसली इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, जैसे हमारे पिछले पैनलिस्ट ने भी कहा, तो क्लियरली ये नंबर्स हमको वॉच आउट करना है। बट जैसे मैंने आपको कहा, अभी जो रिजल्ट के सीजन चल रहे हैं, यहाँ पे जो आंकड़े आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ कंपनी, कुछ सेक्टर्स के अगर आप कॉमेंट्री सुनोगे, तो वो हल्का सा गार्डेड कॉमेंट्री आता हुआ दिख रहा है, थोड़ी सी कॉशियस कॉमेंट्री आती हुई दिख रही है। इसका ये मतलब हम उठा सकते हैं कि जो रेट हाइक्स हमने पिछली बार किए, 2 से 2.25% हमने इंटरेस्ट हाइक कर चुके हैं, तो उसका जो ओवरऑल इंपैक्ट है, जो मार्केट में इतनी ब्याज दरें बढ़ चुकी है, धीमे धीमे उसका असर भी बैलेंस शीट में पड़ना शुरू हुआ है। तो है इसीलिए बहुत जरूरी होगा कि आज RBI क्या बोलते हैं इन क्षेत्र के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज तो इंपैक्टेड है ही, नॉट डोमेस्टिकली, हालांकि जो ग्लोबली जो स्लोडाउन है उसके चलते यहाँ पे तो स्लोडाउन दिख ही रहा है। तो ये 2 कमेंट्री भी वॉच आउट होगा ओवर एंड अबाउट द स्टांस। सच्चिदानंद, ये रूरल साइड की जो ग्रोथ है आगे आने वाले क्वार्टर्स में आपको कैसी दिखती है? हमने देखा बजट में भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा डालने के लिए कदम उठाए गए, बट अभी तक लैग करती आई है। आपको लगता है ये रिवर्स होगा, इंप्रूव होगा? तो हमारा ये मानना था कि रबी क्रॉप और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है फार्मर्स के, दे स्टार्टेड टू मूव इन अ फेवरेबल डायरेक्शन ओवर द लास्ट से कपल ऑफ मंथ्स। लेकिन ये बजट जो आया है उसको देखने के बाद, जो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की, जो सबसे बड़ा लाइन आइटम होता है एक्सपेंडिचर साइड, तो मैं पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 35 लाख करोड़ है और केपेक्स जो है 10 लाख करोड़ है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर YOY टर्म्स में 4% से गिरने वाला है इन FY24 अकॉर्डिंग टू द बजट नंबर्स। और अगर आप इसके नीचे जाएं इस लाइन आइटम के, और जितने भी बड़े सोशल स्कीम्स हैं या जो फ्लैगशिप स्कीम्स कहे जाते हैं, अधिकांश स्कीम्स में पिछले 2 सालों से या तो एक ठहराव आ गया है या फिर एलोकेशन नंबर्स हैव बीन कट डाउन। सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, इस साल सरकार के पास बहुत ही कम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। अगर कोई डोमेस्टिक एक्सीडेंट होता है, जैसे मॉनसून में अगर कोई इरेटिसिटी आती है, और स्काईमेट ने एक बात कही है कि शायद जो सेकेंड हाफ होगा मॉनसून का उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, हमको IMD के फोरकास्ट नहीं मिले हैं, बट इस पर हमको नजर रखनी होगी। दूसरा, यदि कोई ग्लोबल एक्सीडेंट होता है जियोपॉलिटिकल, से वॉर इन यूक्रेन और ईरान इजराइल टेंशंस और US चाइना टेंशंस, इनके कारण अगर कुछ होता है, मेरे ख्याल से सरकार की जो एलोकेशन है वो काफी पिछले 2 सालों से कम होती जा रही है, और फिस्कल कंसोलिडेशन अचीव किया जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कट से, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा बहुत सारे रूरल फेस्ड बिजनेसेस पर। तो यदि सरकार पिवट नहीं कर पाती है समय रहते तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट मेरा मानना है कि एज वी स्पीक रूरल साइड मोमेंटम हैज बिकम स्ट्रांग, और हमारा यह भी मानना था कि देयर कुड बी अ रोटेशन फ्रॉम अर्बन डिमांड टू रूरल डिमांड दिस ईयर, बट आई थिंक विल रिमेन कॉशियस going forward depending on the fiscal stance and the numbers they have come out with. Back to you. Right. अविनाश, बॉन्ड मार्केट में क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ कोर्स यील्ड्स को हमने मूवमेंट देखा, काफी काम है, लेकिन लिक्विडिटी सिचुएशन कैसी है अभी? सिचुएशन अभी भी ठीक चल रही है। आई थिंक देयर इज इनफ लिक्विडिटी इन द सिस्टम, कहीं पर कोई ज्यादा प्रेशर नहीं है। आई थिंक एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म रेट्स, अगर 1 ईयर तक का CD रेट देखें तो वहां पर थोड़ा सा प्रेशर है, बिकॉज वहां पर थोड़ा बैंक्स का बोरिंग ज्यादा है, स्पेशली क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, तो उसके चलते बैंक्स का इनिशियल होलसेल बोरिंग थोड़ा ज्यादा प्रेशर आया था। Everyone. As I set out the first monetary policy statement of the new year, I am reminded of the historical significance of 2023 for the Reserve Bank of India. From being a joint stock company, the Reserve Bank was brought into public ownership on 1st January 1949. Thus, 2023 marks the 75th year of public ownership of the Reserve Bank,
and its emergence as a national institution. This is an opportune moment to briefly reflect upon the evolution of monetary policy over this period. In the 2 decades after independence, the Reserve Bank's role was to support the credit needs of the economy under the 5-year plans. The following 2 decades were characterized by bank nationalization in 1969, the oil shocks and monetization of large budget deficits, and sharp rise in money supply and inflation. Monetary targeting was adopted in the mid-1980s to contain growth in money supply and curb inflation pressures. Since the early 1990s, as everyone knows, the Reserve Bank focused on market reforms and institution building. A multiple indicator approach was adopted in April 1998, under which a host of indicators were monitored for policy making. In the aftermath of the global financial crisis and the taper tantrum, as inflationary conditions worsened in India, flexible inflation targeting, that is the FIT, was formally adopted in June 2016 to provide a credible nominal anchor for monetary policy. As we know, the primary objective of monetary policy under the flexible inflation targeting framework is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. Coming to present times, the unprecedented events of the last 3 years have put to test monetary policy framework across the world. In a very short period, monetary policies across the world have veered from one extreme to the other in response to a series of overlapping shocks. In contrast to the great moderation era of the 1990s and the early part of the current century, monetary policy was confronted with an unprecedented contraction in economic activity, followed by a surge in global inflation. This calls for a deeper understanding of the structural changes in global economy and inflation dynamics and their implications for conduct of monetary policy. In the current unsettled global environment, emerging market economies are facing sharp trade-offs between supporting economic activity and controlling inflation while preserving policy credibility. As global fault lines emerge in trade, technology and investment flows, there is an urgent need to reinforce global cooperation. The world is looking to India, now at the helm of G20, to energize global partnership in several critical areas. This reminds me of what Mahatma Gandhi had said. I do believe, and I quote, I do believe that India can make a lasting contribution to the peace and solid progress of the world, unquote. I would now focus on the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. As you would be aware, the Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 6th, 7th and 8th February. Based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook, the MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will stand revised to 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate to 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for these decisions on the policy rate and the stance. The global economic outlook does not look as grim now as it did a few months ago. Growth prospects in major economies have improved, while inflation is on a descent, though inflation still remains well above the target in major economies.
The situation remains fluid and uncertain. Reflecting this recent optimism, the IMF has revised upwards the global growth estimates for 2022 and 2023. As price pressures wane, several central banks have opted for slower rate hikes or pauses. The US dollar has retreated sharply from its highest level in 2 decades. Tighter financial conditions caused by aggressive monetary policy actions, volatile financial markets, debt distress, protracted geopolitical tensions, and fragmentation continue to impart high uncertainty to the outlook for the global economy. Amidst these volatile global developments, the Indian economy remains resilient. Real GDP growth is estimated at 7% in 2022-23, according to the first advance estimate of the National Statistical Office, that is the NSO. Higher Rabi acreage, sustained urban demand, improving rural demand, robust credit expansion, gains in consumer and business optimism, and the government's enhanced thrust on capital expenditure and infrastructure in the recently presented Union Budget 23-24 should support economic activity in the coming year. Weak external demand and the uncertain global environment, however, would be a drag on the domestic growth prospects. Consumer price inflation in India moved below the upper tolerance level during November and December 2022, driven by a strong decline in prices of vegetables. Core inflation, however, remains sticky. Looking ahead, while inflation is expected to moderate in 2023-24, it is likely to rule above the 4% target. The outlook is clouded by continuing uncertainties from geopolitical tensions, global financial market volatility, rising non-oil commodity prices, and volatile crude oil prices. At the same time, economic activity in India is expected to hold up well. The rate hikes since May 2022 are still working their way through the system. On balance, the MPC was of the view that further calibrated monetary policy action is warranted to keep inflation expectations anchored, break the persistence of core inflation, and thereby strengthen the medium-term growth prospects. Accordingly, the MPC decided to raise policy repo rate by 25 basis points to 6.5%. The MPC will continue to maintain strong vigil on the evolving inflation outlook so as to ensure that it remains within the tolerance band and progressively aligns with the target. Inflation is expected to average 5.6% in the fourth quarter of 23-24, while the policy repo rate is, after today's revision, now stands at 6.5%. Adjusted for inflation, the policy rate still trails its pre-pandemic levels. Liquidity remains in surplus with an average daily absorption of 1.6 lakh crore under the LAF in January 23. The overall monetary conditions therefore remain accommodative, and hence the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. I would now like to provide our assessment of growth and inflation. First, I would like to take up growth. Available data for Q3 and Q4 of the current financial year, that is 22-23, indicate that economic activity in India remains resilient. Urban consumption demand has been firming up, driven by sustained recovery in discretionary spending, especially on services such as travel, tourism, and hospitality. Passenger vehicle sales and domestic air passenger traffic posted robust year-on-year growth. Domestic air passenger traffic crossed pre-pandemic levels for the first time in December 2022. Rural demand continues to show signs of improvement as tractor sales and two-wheeler sales expanded in December. Several high-frequency indicators also point towards
strengthening of activity. I have listed out some of the high frequency indicators which show improvement and strengthening of activity in the footnote of my statement. As you know, the statement will be uploaded in the RBI website. So if you are interested, you may like to have a look at it. Investment activity continues to gain traction. Non-food bank credit expanded by 16.7% as on January 27, 2023. The total flow of resources to the commercial sector has increased by rupees 20.8 lakh crore during 22-23 so far, as against 12.5 lakh crore rupees a year ago. Indicators of fixed investment, that is cement output, steel consumption, and production and import of capital goods registered robust growth in November and December. In several sectors such as cement, steel, mining and chemicals, there are signs that additional capacity is being created in the private sector. According to the RBI survey, seasonally adjusted capacity utilization increased to 74.5% in Q2 22-23. The drag from the net external demand, on the other hand, continued as merchandise exports contracted in Q3 22-23. On the supply side, agricultural activity remains strong with good rabi sowing, higher reservoir levels, good soil moisture, favorable winter temperature, and comfortable availability of fertilizers. PMI manufacturing and PMI services remained in expansion at 55.4 and 57.2 respectively in January 23. Turning to the outlook, the expected higher rabi output has improved the prospects of agriculture and rural demand. The sustained rebound in contact-intensive sectors should support urban consumption. Broad-based credit growth, improved capacity utilization, government's thrust on capital expenditure and infrastructure in the union budget recently presented should bolster investment activity. Let me repeat, broad-based credit growth, improving capacity utilization, government's thrust on capital spending and infrastructure should bolster investment activity. According to our surveys, manufacturing, services and infrastructure sector firms are optimistic about the business outlook. On the other hand, protracted geopolitical tensions, tightening global financial conditions and slowing external demand may continue as downside risks to domestic output. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2023-24 is projected at 6.4%. I repeat, the real GDP growth for 2023-24, that's for the next financial year, is projected at 6.4%, with Q1 at 7.8%, Q2 at 6.2%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.8%. The risks are evenly balanced. I would now like to turn to inflation. Headline CPI inflation moderated by 105 basis points during November-December 2022 from its level of 6.8% in October 22. So October 22 it was 6.8%, and by end December, I mean going by the December data, there was a moderation of 105 basis points, and that was quite a significant moderation. This was due to a softening in food inflation on the back of sharp deflation in vegetable prices, which more than offset the inflationary pressures from cereals, protein-based food items and spices. As a result of this earlier than anticipated steeper seasonal decline in vegetable prices, inflation for Q3 22-23 has turned out to be lower than our projections. Core inflation, that is CPI excluding food and fuel, however, remained elevated. Going ahead, the food
inflation outlook will benefit from a likely bumper Rabi harvest led by wheat and oilseeds. Mandi arrivals and Kharif paddy procurement have been robust, resulting in improvement in buffer stocks of rice. All these developments augur favorably for the food inflation outlook in 2023-24. Considerable uncertainties remain on the likely trajectory of global commodity prices, including price of crude oil. Commodity prices may remain firm with the easing of COVID-19 related restrictions in some parts of the world. The ongoing pass-through of input costs, especially in services, could keep core inflation at elevated levels. The commitment to fiscal consolidation that has been carried forward in the Union Budget 23-24 and the future trajectory of reducing the gross fiscal deficit will engender an environment of macroeconomic stability. This augurs well for the inflation outlook. Further, the low volatility of the Indian rupee relative to the peer currencies limits the impact of imported price pressures and other global spillovers. Taking into account these factors and assuming an average crude oil price Indian basket at $95 per barrel, inflation is projected at 6.5% for the current financial year, that is 2022-23, with Q4 at 5.7%. On the assumption of a normal monsoon, CPI inflation, now I am giving the projection for the next year. On the assumption of a normal monsoon, CPI inflation is projected at 5.3% for 2023-24, with Q1 at 5%, Q2 at 5.4%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.6%. The risks are evenly balanced. Headline inflation has moderated with negative momentum in November and December. But the stickiness of core or underlying inflation is a matter of concern. We need to see a decisive moderation in inflation. We have to remain unwavering in our commitment to bring down CPI headline inflation. Thus, monetary policy has to be tailored to ensuring a durable disinflation process. A rate hike of 25 basis points is therefore considered as appropriate at the current juncture. The reduction in the size of the rate hike provides the opportunity to evaluate the effects of the actions taken so far on the inflation outlook and on the economy at large. It also provides elbow room to weigh all incoming data and forecasts to determine appropriate actions and policy stance going forward. Monetary policy will continue to be agile and alert to the moving parts of the inflation trajectory to effectively address the challenges to the economy. I now turn to the liquidity and financial market conditions. As we approach the end of 2022-23, it is worthwhile to recapitulate the key developments on the monetary policy front over the last 1 year. After the onset of the war in Europe, which drastically altered the global inflation dynamics, the global growth inflation dynamics across the world, including India, we have taken a series of steps in the best interest of the Indian economy. We accorded primacy to price stability over growth in April 2022. We instituted a major reform in monetary policy operating procedure through the introduction of the Standing Deposit Facility, that is SDF. We restored the width of the policy corridor to its pre-pandemic level. We raised the repo rate by 40 basis points and the cash reserve ratio by 50 basis points in an off-cycle meeting in May 2022. We shifted the policy stance to focus on withdrawal of accommodation. We continued the rate tightening cycle
in every meeting of the MPC thereafter. And we adopted a nimble and flexible approach to liquidity management by conducting both variable rate reverse repo and variable rate repo operations as per requirement. As a result of all these measures, and this is very important, as a result of all these measures, the real policy rate has been nudged into positive territory. The banking system has moved out of the Chakravyuh of excess liquidity. Inflation has shown signs of moderation and is moderating, and economic growth continues to be resilient. As I make this statement, system liquidity remains in surplus, though of a lower order compared to April 2022. In the period ahead, while higher government expenditure and anticipated return of forex inflows are likely to augment systemic liquidity, it would get modulated by the scheduled redemption of the LTRO and TLTRO funds during February to April 2023. Under TLTRO and LTRO, as you would recall, during the COVID times, we had injected a lot of liquidity for periods ranging between 1 year to 3 years, and the last bit of that is coming back into RBI during February to April. The Reserve Bank will remain flexible and responsive towards meeting the productive requirements of the economy. We will conduct operations on either side of the LAF depending on the evolving liquidity conditions. As part of our gradual move towards normalizing liquidity and market operations, it has now been decided to restore market hours for the government securities market to the pre-pandemic timing of 9 a.m. to 5 p.m. Moreover, as part of our ongoing endeavor to further develop the government securities market, we propose to permit lending and borrowing of G-Secs. This will provide investors with an avenue to deploy their idle securities, enhance portfolio returns, and facilitate wider participation. This measure will also add depth and liquidity to the G-Sec market, aid efficient price discovery, and work towards a smooth completion of the market borrowing program of the center and the states. The pace of transmission of monetary policy actions to both lending and deposit rates has strengthened in the current tightening cycle. The weighted average lending rate, that is WLR, on fresh rupee loans and outstanding rupee loans, there are two components. One is on the fresh loans that's now being given, and on the outstanding loans, they increased by 137 basis points and 80 basis points respectively during May to December. The weighted average domestic term deposit rate for fresh deposits and outstanding deposits increased by 213 and 75 basis points respectively. The Indian rupee has remained one of the least volatile currencies among its Asian peers in the calendar year 2022 and continues to be so this year also. Similarly, the depreciation and the volatility of the Indian rupee during the current phase of multiple shocks is far lower than what it was during the global financial crisis and the taper tantrum. In a fundamental sense, the movements of the rupee reflect the resilience of the Indian economy. On this matter of volatility and depreciation, I have provided some comparison with other countries, with the Asian peers, as I mentioned, and also I have given a comparison with the scenario which prevailed during the taper tantrum and during the global financial crisis. That is all contained in the footnote of my statement. If those of you who are interested may like to refer to it. I now turn my focus to the external sector. The current account deficit for the first half of 22-23 stood at 3.3% of GDP. The situation has shown improvement in Q3 22-23 as imports moderated in the wake of lower commodity prices, resulting in narrowing of the merchandise trade deficit. Further, services exports rose by
24.9% year-on-year in Q3 22-23, driven by software, business and travel services. Global software and IT services spending is expected to remain strong in 2023. Remittance growth for India in the first half of 22-23 was around 26%, more than twice the World Bank's projection for the year. This is likely to remain robust owing to better growth prospects of the Gulf countries. The net balance under services and remittance are expected to remain in large surplus, partly offsetting the trade deficit. The current account deficit is expected to moderate in H2, that is in the second half of 22-23, and remain eminently manageable and within the parameters of viability. On the financing side, net foreign direct investment, that is FDI flows, remain strong at $22.3 billion during April to December 22. Foreign portfolio inflows have shown signs of improvement with positive flows of $8.5 billion during July to February, led by equity flows. It has to be recognized that if you take the full year, it's in the, it is still negative. But the point I am making is that from July onwards, the foreign portfolio investments, the foreign portfolio flows have picked up. Of course, it has seen a kind of a up and down, month on month, but overall from July onwards, it is a positive flow, positive inflow of 8.5 billion between July to February 6th. Net inflows under the non-resident deposits, and this is again important, net inflows under non-resident deposits increased to $3.6 billion during April-November 22 from $2.6 billion a year ago, boosted by the Reserve Bank's July 6th measures to attract inflows into the country. Foreign exchange reserves have rebounded from $524.5 billion on October 21st, 2022 to $5.6.8 billion as on January 27th this year, that is January 27th, 2023. And this covers around 9.4 months of projected imports of 2022-23. India's external debt ratios are lower by international standards, and I have provided some data again to back the statement. When I am saying that India's external debt ratios are low by international standards, I have backed it up with data which is given in the footnote of my statement. I shall now announce certain additional measures, and there are about, I think, 6 measures. There are 5 measures, and they are very important. I request your patience. The first one relates to penal interest or penal charges on loans. At present, regulated entities of the Reserve Bank are required to have a policy for levy of penal interest on advances. The regulated entities, however, follow divergent practices on levying of such charges. In certain cases, these charges are found to be excessive. To further enhance transparency, reasonableness, and consumer protection, draft guidelines on levy of penal charges will be issued to obtain comments from stakeholders. The next announcement relates to climate risk and sustainable finance. Recognizing the importance of climate-related financial risks which may have financial stability implications, the Reserve Bank had issued a discussion paper on climate risk and sustainable finance sometime in July last year, that is in July 22. Based on the feedback received, it has been decided to issue guidelines for, and there are 3 things here, it has been decided to issue guidelines for the regulated entities on number 1, a broad framework for acceptance of green deposits, 2, disclosure framework on climate related financial risks, and 3, guidance on climate scenario analysis and stress testing. So these measures together will ensure that our financial system
also starts developing, starts building in the forces of resilience to withstand any possibility or any possible emergence of vulnerability to climate change. And I think these measures are quite timely. These are the first set of measures. There are a few other measures which will follow in due course. But for the time being, we are announcing these three measures. The next one relates to expansion of the scope of the TREDS platform. For the benefit of MSMEs, the Reserve Bank had introduced a framework in 2014 to facilitate financing of their trade receivables, that is the trade receivables of the MSMEs, through the trade receivables discounting system, that is the TREDS. It is now proposed to expand the scope of TREDS by first providing insurance facility for invoice financing, second permitting all entities and institutions to undertaking factoring business to participate as financiers in TREDS, and third permitting rediscounting of invoices, that is developing a secondary market in TREDS. These measures are expected to improve the cash flows of the MSMEs. The next announcement, the next measure relates to extending UPI for inbound travelers to India. UPI has become hugely popular for retail digital payments in India. It's now proposed to permit all inbound travelers to India to use UPI for their merchant payments, that is P2M, while there in the country. To begin with, this facility will be extended to travelers from G20 countries arriving at select international airports. And this is to begin with. Going forward, obviously, it will be expanded based on our experience. And the last announcement again relates to, it's an announcement which is again for the benefit of the common person. This relates to QR code based coin vending machine and launching of a pilot project. The Reserve Bank of India will launch a pilot project on QR code based coin vending machine in 12 cities. These vending machines will dispense coins against debit to customers' account using UPI instead of physical tendering of bank notes. This will enhance the ease of access to coins. Based on the learnings from the pilot, guidelines will be issued to banks to promote distribution of coins using these machines. I would now like to conclude as follows. As we begin a new year, and we have just started the calendar year, we are going to soon start a new financial year. As we begin a new year, it's a good time to reflect upon our journey so far and what lies ahead. When I look back, it is heartening to note that the Indian economy successfully dealt with multiple major shocks in the last 3 years and has emerged stronger than before. India has the inherent strength and enabling policy environment and strong macroeconomic fundamentals and buffers to deal with the future challenges. I am reminded here of the words of Netaji Subhash Chandra Bose, never lose your faith in the destiny of India. Thank you. Namaskar. क्या बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुछ पंक्तियों के साथ उन्होंने अपनी स्पीच आज की खत्म की। नेवर लूज होप इन द डेस्टिनी ऑफ इंडिया। क्या बात है, बहुत ही बुलिश कमेंट्री मुझे ये वाली लाइन लगी। लेकिन राजेश के पास जाते हैं सबसे पहले। राजेश, बाजार एक बार को थोड़ा सा सहम गया था, आपने मार्केट रिएक्शन, बैंक निफ्टी रिएक्शन और जो कमेंट्री आई है वो कैसे रीड की? ये डिसइंफ्लेशन उधर फेड साहब भी बोल रहे थे, पावल जी, और यहां भी आज हमने इन्फ्लेशन और डिसेंट, कहीं ना कहीं ये कॉमनैलिटी दिखाई दी मुझे तो। हाँ, basically, the world is linked, no doubt about it. The commodity prices have reduced, which is good news for India. But at the same time, we need to keep in mind that he mentioned that core inflation still remains a little bit sticky. And that's where basically, RBI is going to monitor closely over a period of next 3, 4, 6 months. Mota-moti, broadly, I think is a neutral from the market perspective. No positive surprises, no negative surprises. RBI is data driven and that's how it should be, which is a good news for all of us.
And there are few good signs, and then there are few what I would say kind of a world is moving into slow lane. So RBI is cognizant of the fact that there are risks to the growth, and therefore inflation is coming down slowly, which is a good news. And for them to basically from here on is going to be neutral policy. We will not expect any hike on interest rate, and of course we do not expect any further accommodation in interest rate. So it's going to be policy. It is I think the 1 year is going to be stable now from here. ठीक, आशुतोष खजूरिया जी भी हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं फेडरल बैंक से। आशुतोष, आपने कमेंट्री को कैसे एनालाइज किया? ये जो कोर इन्फ्लेशन का मामला अभी राजेश भी जिसको रेफर कर रहे थे, क्या वो एक रिस्क है? हाँ, ये तो है ही है। कोर इन्फ्लेशन अभी इंट्रांसिडेंट बोल सकते हैं आप उसको, हठी कोर इन्फ्लेशन है, वो नीचे नहीं आ रही है और वो कंसिस्टेंटली 5 के ऊपर ही है। और आई थिंक यस, हेडलाइन इन्फ्लेशन जरूर नीचे आई है और कंसिडरेबली नीचे आई है। दो महीनों में करीब 105 बेसिस पॉइंट्स, जैसा कि गवर्नर साहब ने शेयर किया, आई है और वो 6 के नीचे है लगातार 2 महीनों से। लेकिन ये ज्यादा जरूरी होगा कि कोर इन्फ्लेशन भी नीचे आए, 5 के नीचे आए कम से कम। और शायद ये एक सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया कि क्यों हम एक और वृद्धि करना चाहते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स की। तो 6.25 से 6.50 ले जाने के लिए एक जो महत्वपूर्ण कारण जो उन्होंने बताया वो कोर इन्फ्लेशन के बढ़े रहने के कारण, बढ़े रहने की वजह। ये बताइए कि कई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का हवाला दे रहे थे गवर्नर साहब, आप इस समय क्वालिटी ऑफ ग्रोथ कैसे देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर जी की कमेंट्री हो, चाहे वो गवर्नर साहब की हो, ये भी कहने से हिचक नहीं रहे कि शायद भारत अपनी ग्रोथ के एस्टिमेट को 12 महीने आगे थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ को देखें और लगातार पूरे वर्ष भर जिस तरह से वो बनी रही, पहले बढ़ के जो है वो 17 के करीब पहुंची और वहां पर टिकी हुई है उसके आसपास। हाँ, उसमें कुछ योगदान नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के बढ़ने का भी था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी हाई होने के कारण, इन्फ्लेशन ज्यादा होने के कारण जो इवन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो कार्यशील पूंजी चाहिए उद्योगों को या दूसरे व्यवसायों को, उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है मूल्य बढ़ने के कारण। तो वो एक कारण जरूर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि 6.4 की ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा, अगर मान लो कुछ ऐसे कारण आए जो अनफोर्सिंग रीजंस जो अभी नहीं दिख रहे, तो भी जो बहुत ज्यादा उससे दूर नहीं रहेगी। तो 6 के ऊपर रहना संभव है। बिल्कुल। हमारे साथ अब शलभ सक्सेना भी है, एमडी एंड सीईओ स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल के। मिस्टर सक्सेना, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा? बहुत हद तक इन लाइन ही था जो गवर्नर साहब ने बोला भी। हालांकि वो हमेशा लास्ट टाइम भी ये कहते रहे कि ग्रोथ रिमेन्स रेजिलिएंट, ग्रोथ और इंडिकेटर्स की, कई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात भी की। बैटल अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज नॉट ओवर, लास्ट टाइम कहा था, लेकिन इस बार इतना मेंशन नहीं था। आपका फर्स्ट टेक क्या है? So good morning all of you. My first reaction, अगर आप मेरे से पूछे तो थोड़ा सा cautious stance है, given the numbers. काफी सारे आंकड़े दिखाए गए। अगर आज आप ग्लोबल इंडाइसेस या ग्लोबल नंबर्स देखें, चाहे वो कमोडिटी प्राइसेस हो, इवन इन्फ्लेशन फिगर्स ग्लोबली आप देखें तो थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड है। आप इंडिया की स्टोरी देखें, चाहे वो रबी का सोइंग हो, ऑलमोस्ट 6.8 6.9% हायर देन द प्रीवियस नंबर चल रहा है। तो ओवरऑल चाहे वो पैसेंजर सेल्स हो, एफएमसीजी सेल्स हो, पूरी स्टोरी अगर आप देखें और सुने तो ऐसा लग रहा था कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव, डायरेक्शन। उस बीच में एक 0.25% का हाइक, यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू, एक पॉज बटन भी कई लोगों का था कि एटलीस्ट एक साइकिल के लिए पॉज लगाएंगे। बट इन द पास्ट द रेगुलेटर एंड द रिजर्व बैंक, उन लोगों ने काफी अच्छा इंडिया को स्टीयर किया है फ्रॉम द ग्लोबल केओस व्हिच वाज देयर। अभी भी पूरा हटा नहीं है, लेकिन जनरल जो ड्रिफ्ट लग रहा है वो पॉजिटिव लग रहा है। सो उस
उसको बैकग्राउंड में देखते हुए 0.25% हाइक इज व्हाट इट इज। इमीडिएट रिएक्शन यही होगा कि अगर एक साइकिल पीछे जाता तो ठीक रहता, बट एनीवे सो वी वर एक्सपेक्टिंग दिस, सो इट वाज ईदर दिस वे और दैट वे, नो रियल सरप्राइज इन माय माइंड। द बिगर क्वेश्चन एंड द बिगर पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक इज कि जो नंबर्स दिख रहे हैं हमें, चाहे वो इकोनॉमी के हो, इन्फ्लेशन गोइंग इज एट द इट्स ऑलमोस्ट एट अ स्टैटिक लेवल, प्रोबेबली ड्रिफ्टिंग डाउन। उस केस में देखा जाए तो एक तरह से इन माय व्यू इकोनॉमी इज इन सेफ हैंड्स एंड आई थिंक इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नोटेड इकोनॉमिस्ट। मदन, आप कैसे चेंजेस जो आ रहे हैं, जो अकोमोडेटिव स्टांस पे इतना स्ट्रेस हमने आज देखा, 3-4 बार उन्होंने अकोमोडेटिव स्टांस वाली बात बोली, और बाजार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमसे बात कर रहे थे अभी, चाहे वो राजेश हो, फंड मैनेजर लक्ष्मी, सभी ये कह रहे हैं कि बाजार ऑलरेडी ये बात मान रहा है कि वी आर गोइंग इनटू अ लॉन्ग पॉज। क्या ये सही होगा? ये ऐसा लगता है कि ये लास्ट रेट हाइक है और इसके बाद दे विल प्रोबब्ली नॉट बी एनी मोर रेट हाइक। और जो इंडिकेशन जो मिलता है, जैसे कि आरबीआई का जो भी फोरकास्ट इन्फ्लेशन का है अगले साल के लिए 5.3% है, दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन दैट इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी अबव 5%। तो हमारा पहले ये मानना था कि शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कुड बी अ रेट रिवर्सल अगर इन्फ्लेशन स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम ट्रैजेक्टरी देखेंगे अभी फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, देयर टेंड्स टू बी एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द क्वार्टरली इन्फ्लेशन नंबर्स। तो यही से हमें ये पिकअप कर सकते हैं कि देयर इज प्रॉब्ली नॉट गोइंग टू बी एनी रेट कट ऑन द होराइजन for the next financial year. और जैसे कि लिक्विडिटी, मेरे ख्याल में the way we look at liquidity is the net liquidity, जहाँ पे जैसे को RBI said is 1.6 lakh crores, वहां पे ये एडजस्ट, अगर हम ये LTROs का एडजस्ट करेंगे, आई थिंक लिक्विडिटी इज लेस देन 1 lakh crores. But I think that is the critical factor which RBI has used for maintaining the stance, saying अभी भी ज्यादा surplus है, therefore withdrawal of liquidity is still the stance. I would have preferred that they go to a neutral stance, क्योंकि in the course of the year ऐसा लगता है कि जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ पिकअप करेगा, गवर्नमेंट बोरिंग भी शुरू हो जाएगा, and we won't be seeing the same kind of increase in terms of deposits. ऐसे हो सकता है कि लिक्विडिटी का कुछ प्रेशर हो सकता है। At that point of time, there may have to be intervention. ये तो ऑफकोर्स आरबीआई ने बफर किया है कि बोला कि they will be looking at it, जैसे कि ये LTROs का withdrawal repayment होगा, there will definitely be a case of probably injection of liquidity through the LF window. ऐसा लगता है कि टर्म रिपो रेट में टर्म रिपो ऑप्शंस could be used, or it's also possible that open market operations could be there. So I think on the whole the surprise is actually the inflation trajectory जो दिया है for next year, as well as the GDP growth. हमारा भी यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, we had an estimate of 6 to 6.5%. A lot of my colleague economists were looking at numbers less than 5.5%, but we felt that 6.5 is fair enough. और economic survey is talking of 6.5 now. RBI अभी 6.4 बोल रहे हैं. So it looks like the Indian economy is going to float along quite well in the absence of any shock. हमारे साथ मिस्टर रमन अग्रवाल भी है, डायरेक्टर फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल से। मिस्टर रमन, जिस तरह से ग्रोथ इकोनॉमिक एक्टिविटी तो अभी भी रेजिलिएंट की बात लगातार कह रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन आल्सो। पैसेंजर व्हीकल सेल्स हो, चाहे आप रूरल डिमांड की बात करो, सब जगह साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट है। ये जो रेट हाइक होता है, और अगर इंडस्ट्री प्लेयर्स रेट हाइक पास करते हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा? हो जाएगा। जो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक मार्केट में रहा है कि पिछले कुछ टाइम से जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ना चालू हुआ है, ऐसा था कि ऐसा माना जाता था कि शायद क्रेडिट पर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आज की डेट में भी और गवर्नर ने ये बात कही है कि क्रेडिट डिमांड कंटिन्यूज टू बी रोबस्ट एंड गोइंग अहेड इट विल कंटिन्यू टू बी रोबस्ट। सो आई थिंक ये जो इंटरेस्ट रेट और जो 0.25% का रेट इंटर हाइक हुआ है, ये वॉज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड लाइन, और जैसे पीछे और भी स्पीकर्स ने कहा, इसलिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज वाली बात नहीं आई है। तो आई थिंक जो ग्रोथ स्टोरी है वो चलती रहेगी, क्रेडिट डिमांड बढ़ेगा और आगे जाने पर इसकी क्रेडिट की डिमांड और बढ़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि खास इम्पैक्ट कुछ इस पर आने वाला है। नीश जी, आप बताइए, ये बाजार का जो रिस्पॉन्स है, मोस्ट ऑफ द पैनलिस्ट जिनसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात बिलीव कर रहे हैं कि शायद ये पॉज है, ये लास्ट ऑफ द रेट हाइक्स है। सब निवेश साहब भी ये कह रहे थे, कईयों को लग रहा है कि ये एक लंबे पॉज की शुरुआत है, लेकिन बाजार का रिएक्शन बड़ा रिलक्टेंट है। बाजार किस बात से नर्वस है आपके हिसाब से? ये मेरे लिए सवाल जी, अवनीश। हाय, तो बाजार आई थिंक जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि
एक्सपेक्टेशन था कि शायद स्टांस चेंज हो जाए, बट जो गवर्नर ने एंड में बोला कि दे वांट टू कीप एल्बो रूम फॉर आइदर साइड मूवमेंट, तो आई थिंक मार्केट का रिएक्शन उस पे है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक रेट हाइक और हो जाए, बिकॉज जहां तक पॉलिसी का रुख लगता है वो ये है कि ग्रोथ तो स्ट्रांग है, जैसे कि उनका प्रोजेक्शन भी बताता है कि 6.4 इज द ग्रोथ रेट, एंड उनको लगता है इन्फ्लेशन को इवन आफ्टर रेजिंग 225 बेसिस पॉइंट अगर आपका क्रेडिट ग्रोथ पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ा रेट अगर ज्यादा हायर भी रहेगा थोड़े ज्यादा टाइम के लिए तो ग्रोथ पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो उसका आई थिंक उसके चलते आई थिंक आरबीआई अभी जो इन्फ्लेशन है वो 4 के आसपास लाना चाहता है, जैसे कि गवर्नर ने इस पॉलिसी में भी और लास्ट पॉलिसी में भी बोला था कि 4% का उनको रेट चाहिए, और इसके लिए ऑल्सो 5.3 का नेक्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन टारगेट है विच इज वेल अबव 4%। तो उसको देखते हुए आई थिंक मार्केट इज नॉट वेरी पॉजिटिव, इट इज स्लाइटली नेगेटिव, थोड़ा मार्केट के लिए मंदी है क्योंकि अभी इस साल का तो बोरिंग ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसलिए शायद मार्केट अभी ज्यादा नहीं गिरेगा इस साल में, बट अप्रैल में जैसे वापस से बोरिंग शुरू होगा गवर्नमेंट का तो उस टाइम देखना पड़ेगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। लिक्विडिटी साइड पे भी दे स्टिल वांट टू विड्रॉ लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी अगर कम होता है तो उसका भी बाजार पे इम्पैक्ट आएगा, इसलिए मार्केट थोड़ा सा वीक हो गया है। इनफैक्ट मदन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर जो विंडो या मोर एल्बो रूम, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि हम डेटा डिपेंडेंट है, जस्ट लाइक फेड ने कहा है कि हम डेटा डिपेंडेंट है, अगर डेटा एडवर्स आ गया यहां से या कोर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा, जो रिस्क है सभी मान रहे हैं ये टेबल पे, तो और एक और 25 बेसिस पॉइंट का हाइक ये बाजार में क्या मूड खराब कर सकता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रंट पे लैग इफेक्ट के साथ ये हायर रेट सिस्टम में आने की वजह से तो ओवरऑल ग्रोथ पे भी डैम्परिंग हो सकता है, पूरा इक्वेशन मिस कर सकता है। मदन, तो अगर हम देखेंगे इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट जो आप बोल रहे हैं कि वो होगा कि दैट देयर कुड बी अनदर रेट हाइक इन केस इन्फ्लेशन नंबर गोज बियॉन्ड दीज पर्टिकुलर नंबर्स। तो अभी जो ऐसा लगता है कि ये 25% 25 बेसिस पॉइंट हाइक जो हुआ है इट्स बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस, जैसे कि इन्फ्लेशन का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर का प्रस्ताव किया है, और फर्स्ट क्वार्टर में आरबीआई बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन विल कम डाउन टू 5% व्हिच इज अ रीजनेबल काइंड ऑफ नंबर, उसके बाद इट बिकम्स 5.4 and then to 5.6। so ऐसा लगता है कि अगर इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्टरी जो इसी दिशा में जाएगा तो ये टॉलरेबल होगा एंड देयर विल नॉट बी एनी एक्शन टेकन बाय द आरबीआई। However, अगर कोई एक्सटर्नल शॉक होगा या डोमेस्टिक शॉक भी हो सकता है, जैसे कि अभी हम बहुत सैंग्विन है कि रबी हार्वेस्ट बहुत अच्छा होगा और व्हीट गेहूं का प्राइस विल कम डाउन, ऑयल सीड्स प्राइसेस विल कम डाउन, अगर यहाँ पे कोई शॉक होगा देन आई थिंक वी शुड रिमेंबर दैट देयर कुड बी एन अपसाइड टू इन्फ्लेशन इन विच देयर कुड बी फर्दर हाइक्स। तो मेरे ख्याल में अभी जैसे लगता है कि विद दीज काइंड ऑफ नंबर्स देयर विल बी अ लॉन्ग पॉज, प्रोट्रैक्टेड पॉज, and अगर कोई डिस्टॉर्शन होगा in the upward direction definitely there will be room for increasing the rates again, but ऐसा लगता है कि there will definitely not be a room for reduction of interest rates unless something dramatically happens to these inflation numbers। का डिले होना और एक और रेट हाइक का विंडो ओपन रहना इटसेल्फ भी एक काफी बड़ा डिसरप्शन हो सकता है। शलभ, मैं आपसे जानना चाहूंगा और फिर मैं रमन जी के पास जाऊंगा। मार्केट ऑलरेडी अभी तक के रेट हाइक्स एब्जॉर्ब कर रहा है, इनफैक्ट आगे आने वाले कुछ महीनों तक हम देख ही रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द लेंडर्स जो हैं 10-20 बेसिस पॉइंट, 35 बेसिस पॉइंट अपना एडजस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ा रहे हैं। अगर और यहां से रेट्स आगे बढ़ते हैं बिना डिमांड को इंपैक्ट किए, ये एब्जॉर्ब हो पाएंगे सिस्टम में? अजय जी हमें उस टाइम पे एसेस करनी पड़ेगी सिचुएशन। आज की तारीख में जो सिचुएशन है उसमें तो व्हाइल वी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर दिस वी माइट जस्ट स्टे पुट, मगर एक और अगर बढ़ता है तो बहुत सारे लीवर्स हिलते हैं उसके चक्कर में, तो वील हैव टू टेक अ पोजीशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। बाकी भी सारी चीजें देखनी होंगी। सेम सवाल। मैं भी सहमत हूं कि अभी तो ऐसा लगता है कि अभी तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और रहेगा कि लिक्विडिटी पोजीशन क्या रहती है आगे जाने पर, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। आज की डेट में भी अभी तो लिक्विडिटी सरप्लस है, ठीक चल रहा है, लेकिन अगर और हाइक होने से अगर लिक्विडिटी में भी और मेजर इंपैक्ट आता है
तो फिर शायद क्रेडिट डिमांड पे कुछ असर पड़े, पर आज की डेट में मान के चले तो थिंग्स लुक प्रीटी मच गुड। ओके, और वेरी क्विकली मदन, क्योंकि रूरल डिमांड की बात लगातार की जा रही है और इस बार भी ये सेकंड इन लाइन होगा जब एमपीसी में इसका भी जिक्र हुआ कि रूरल डिमांड अब साइंस शो कर रहा है इंप्रूवमेंट के, क्या ये एक बड़ा रिलीफ होगा? आप कैसे देख रहे हैं इसको? तो बिल्कुल रिलीफ होगा, क्योंकि ये जो आरबीआई बोल रहे हैं, आई थिंक इट्स क्वाइट रिएश्योरिंग। क्योंकि अगर हम ये कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का जो भी ना इन्वेस्टर कॉल्स पे जो भी डॉक्यूमेंट्स जो वेबसाइट पे पुट अप किए गए हैं, व्हेन यू लुक एट इट, ज्यादातर ये एफएमसीजी कंपनीज आर स्टिल सेइंग दैट द रूरल डिमांड इज नॉट पिक्ड अप टू द सेम एक्सटेंट एज व्हाट दे हैड एक्सपेक्टेड। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हैज बीन लैगिंग। तो अगर आरबीआई का अनुमान है कि देयर इज गोइंग टू बी अ रिवाइवल बिकॉज ऑफ द गुड हार्वेस्ट, आई थिंक दैट इज गुड न्यूज फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली हम देखते हैं कि अराउंड 45-50% ऑफ ओवरऑल डिमांड एक्चुअली कम्स फ्रॉम द रूरल सेक्टर, जो जहां पे फिर से अगर 50% 50% इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और ये तो टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि रूरल इकोनॉमी इज समथिंग व्हिच हैज बीन लैगिंग इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। और अगर हम कंजम्पशन डिमांड, कंज्यूमर डिमांड से देखेंगे, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री देखेंगे, आई थिंक दे आर ऑल लुकिंग एट द रूरल सेक्टर फॉर फिलिप। अगर ये होगा, आई थिंक इट विल डेफिनेटली बी अ गुड साइन। अवनीश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, अगर बैंक निफ्टी का आज मूवमेंट देखिए जरा, डायरेक्टर साहब लेके आइए। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर था, 65 पॉइंट कितना नीचे आ गया, लेके आइए डायरेक्टर साहब। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट इन द रेड आ गया है। काफी अच्छा रिएक्शन आया, मतलब क्लियर रिएक्शन आया। ये वाला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया अभी कि एल्बो रूम खुली छूटी है, तो ये जो एक 9 में से 10 बिलीव कर रहे थे कि ये लास्ट रेट हाइक है और पॉज आएगा। अब जो है वो मामला इक्वेशन चेंज हो गया है, एक और रेट हाइक टेबल पे आ गया है जो अभी तक नहीं था। ये देखिए, बैंक निफ्टी 35 पॉइंट इन द रेड और टॉप से काफी ज्यादा गिर गया है। इनफैक्ट ये बताइए कि मार्केट तो वैल्यूएशन मार्केट के फिर महंगे लगने लगेंगे अगर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऊपर जाती है, पूरा वैल्यूएशन मॉडल चेंज हो जाएगा, नहीं? आई थिंक आपका कहना सही है। ये रिएक्शन रहा है बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नर ने रूम छोड़ दिया है कि वो रेट हाइक कर सकते हैं। बट जैसे मदन ने भी कहा कि अगर ट्रेजेक्ट्री और जो रुख है इन्फ्लेशन का ट्रेजेक्ट्री है, अगर वो सेम रहा तो ये लॉन्ग पॉज होगा बहुत। बट मार्केट को शायद एक्सपेक्टेशन था कि शायद आरबीआई पॉज का इंडिकेशन दे देगा, तो वो दिया नहीं है। तो आई थिंक उसकी वजह से मार्केट अभी थोड़ा सा गिव अप कर रहा है गेम्स, और उसकी वजह से आपको बैंकिंग सेक्टर्स ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा प्रेशर आएगा, बिकॉज डिपॉजिट जैसे रेट ऊपर जाएगा और लिक्विडिटी टाइट होगी तो डिपॉजिट रेट्स भी बढ़ सकते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट 3 से 6 महीने में, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ जैसे बात करी वो स्ट्रांग है और डिपॉजिट ग्रोथ इज लोअर देन क्रेडिट ग्रोथ। तो वो कैचअप होने में शायद आपके डिपॉजिट रेट ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे बैंक्स को, उससे कॉस्ट ऑफ फंडिंग पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो उसको देखते हुए आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स थोड़ा सा गिव अप कर रहे हैं गेन्स। यही एक बिल्कुल इसी सेंटिमेंट को हम देख भी रहे हैं कि बैंक निफ्टी यानी बैंकिंग स्टॉक्स गिर रहे हैं, लेकिन निफ्टी आपको फिर भी ग्रीन में दिख रहा है। बिल्कुल, आज की स्पेशल कवरेज में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आशुतोष खजूरिया, मदन सबनवेज, शलभ सक्सेना, रमन अग्रवाल, अविनाश जैन, आप सभी का, राजेश कठौरी और लक्ष्मी अय्यर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इस मेगा कवरेज में अपने व्यूज हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो क्रेडिट पॉलिसी रेपो रेट तो उसी इन लाइन हुई, लेकिन आगे एक रेट हाइक की जो बात कर दिया वो बाजार को ये टेबल पे आ गया। इन्होंने नहीं की कि रेट हाइक, थोड़ा सा उनकी बातों से जो उनकी बातों से बाजार को लगा कि रूम ओपन है, अगर कोर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा तो ये टेबल पे एक और रेट हाइक आके बैठ गया है। वो ये नहीं कह रहा कि आपके प्लेट में आ रहा है, लेकिन टेबल पे आके बैठ गया है। पिछली बार स्टिकी की बात की थी, इस बार फिर मेंशन कर दी तो बाजार को सोचिए अगर किसी कमेंट्री में आगे आने वाले वीक्स में अगर फेड साहब ने ये कह दिया कि कोर बहुत स्टिकी है और रूम अभी भी ओपन है, तो पूरा दरवाजे नीचे की तरफ खुल सकता है। इसलिए केयरफुल रह के काम करें। ऑलराइट प्रियंका, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। नमस्कार।